try to go through the marketing basics with an Islamic perspective, right? I'm pretty much sure that whatever marketing or other subjects, operations or finance that we have done, they are primarily, at least in the first and second semester, they have been the common papers, right? Yes, sir. Right. So we need to revisit our marketing with an Islamic lens, right? Or if not Islamic lens, with a, we can say with a little bit of more ethical lens. That's what I often call it. Good that more people are joining. Alhamdulillah. So basically, this paper, Islamic retail products. Those of you who have done their summer training in some Islamic bank. I mean, I came to know that some of you have done it at the bank Maisara in Oman. So they must already have come across the retail banking products like the housing loans or the vehicle financing or the financing of the factories and other things. So they must have got some idea about the Islamic retail products. So primarily, it is you know it is an exposure to the different types of products which the Islamic banks or financial institutions have to offer. We will be focusing mainly on the banks. But before that, let me just ask you a few things which will help us in, it will be some kind of a refresher for the marketing that we have already done. Okay. Am I audible? Yes, sir. Oh, okay. So, can somebody give me a definition of marketing? I mean, something. What is your understanding? I don't want the definition from Philip Kotler. Something what you have understood over the last 2, 3 semesters. So marketing is something that we aware the consumers about our product, what Okay. we are offering in the market. Okay. So you're talking about the communication function, right? Yes, sir. Making the consumers aware of the product that you have to offer to them. Good. What else? So marketing is displaying our product in a better way. Okay. That is also fine. Good. That is also a part of marketing, display of products, merchandising, displaying. Again, that is a part of communication. What else? What is the starting point? Actually, I'm more interested in knowing what is the starting point of marketing. How do you differentiate it from the sales function? Sir, planning. Okay, that is vague, but I take it. Planning is, fine. Planning is something that you require everywhere. You need everywhere. A very very general response. Sir, strategy. Okay, marketing strategy, market planning. What is the starting point? That's what I'm asking you. From where do you start marketing? What is that focal point? Sir, researching about our the consumer needs. Oh, that's you got it. Very nice. The starting point for any marketer or for any marketing exercise is identifying the consumer needs, right? So that is the starting point. Now, how do you define a need?
Yes, आप नीड को कैसे डिफाइन करेंगे? So what people want and they are willing to pay the price for it. Okay, you talked about want, you talked about the price which people are willing to pay for it. Okay, good. But how do you define the need? It is closer. I mean, what you have said is something closer to what I am looking forward to. Okay, okay, good. Any other response? I want more people to participate. From the marketing perspective, yes. Sir, don't know. No, you don't. Please don't say this, यार. ऐसे मत कहा करो भाई. Don't know का क्या मतलब है? अब आप फोर्थ सेमेस्टर में डोंट नो, मुझे नहीं पता, ये सब चीजें नहीं चलेंगी. कुछ ना कुछ तो बताना. नीड एक ऐसी चीज है, मैं बताता हूँ, एंड इमीडिएटली आपको याद आएगा कि ये तो बात पढ़ चुके हैं, ये तो हम जानते हैं. That why I'm giving you this refresher, because by this time there's a tendency that, and it is very common, it is very much human, that we all tend to forget. हम लोग भूल जाते हैं, नई चीजें याद आ जाती हैं. आप सुबह उठते हैं, when we wake up early in the morning, and after the initial getting freshen up and everything, कोई आपको, nobody tells you कि आपको भूख लगी है, आपको नाश्ता चाहिए. You already start feeling, or rather sometimes you wake up with the pangs of hunger. ये बहुत भूख लगी, उठते ही पहला रिएक्शन होता है यार बहुत भूख लगी है. होता है नहीं होता है? Yes, sir. होता है ना? So this is it is a feeling, it is a feeling of felt deprivation. मतलब आप भूख के साथ उठेंगे तो एक यू विल वेक अप विद सम काइंड ऑफ डिससेटिस्फैक्शन. जब डिप्राइव होंगे किसी चीज से तो वो अंदर से महसूस करेंगे. सिमिलरली, अब जैसे जैसे मौसम बदल रहा है तो गर्म कपड़े हम लोग वापस रख रहे हैं. जो मोटी मोटी जैकेट्स पहने हुए थे वो निकल के वो रख दी गई हैं. कुछ लोग अभी आदिवासी के स्वेटर पहने हुए हैं. कोई लोग जो है सुबह शाम थोड़ा बहुत एहतियात कर लेते हैं. कुछ लोग बिल्कुल ही टी शर्ट में आ चुके हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन देयर इंडिविजुअल immunity, but it is a common observation. So need is actually a state. It is a state का मतलब एक हालत है. It is a state of felt deprivation. You feel that deprivation, right? It is biological in nature. Nobody tells you from outside. Need is internal to you. We are born with the needs and we continue to cater to our needs till our last breath. Are you getting me? Yes, sir. है ना? So everybody, जितने भी चाहे ह्यूमन बींग्स हो या रेस्ट ऑफ द एनिमल्स हो, सबकी अपनी अपनी जरूरतें हैं जिनको वो पूरी जिंदगी पूरा करता रहता है, कोशिश करता है कि उनको पूरा करे. Some of the common or very very basic needs: need to cover our body, need for food, need for health, and so on. I'm sure all of you have
studied the Maslow's hierarchy of needs theory, isn't it? पढ़ी है आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. ओबी में पढ़ी है, ओबी में पढ़ी होगी, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ी होगी. कौन कौन सी नीड्स का वो उसमें हायरार्की है? So Physiological यस, needs. फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं. वेरी गुड, वेरी बेसिक नीड्स. physical needs, safety needs, self-actualization needs, self-esteem needs, and psychological needs. वेरी गुड, वेरी गुड. So it says that the basic needs, as I was talking about, the need for food, for water, for clothing, and all. And as you fulfill your basic needs, you can climb to the next level of the needs. Like basic के बाद फिर safety needs, फिर need for belongingness and esteem and self-actualization and so on. So there are so many different types of needs which exist, right? Nobody can create the needs. Needs को create नहीं किया जा सकता. At the most, people can help you. The marketing people or other people can help you in discovering your needs. और needs जो हैं evolve होती हैं. Are you getting me? As we grow, छोटे बच्चे से एक टॉडलर होता है, धीरे धीरे बड़े होते हैं और बड़े होते हैं एडोलेसेंस में, यूथ में और एंड सो ऑन. तो हर स्टेज पे नीड्स इवॉल्व होती रहती हैं. छोटा बच्चा है, उसके खेलने की चीजें अलग हैं, राइट? आर यू विद मी? Yes, sir. आज के जमाने में जैसे छोटा बच्चा है वो भी मोबाइल से खेल रहा है 6 महीने का, और 16 साल का भी मोबाइल से खेल रहा है, और 26 साल का भी मोबाइल से खेल रहा है, और 36 साल का भी मोबाइल से खेल रहा है. आजकल थोड़ा मामला अलग हो गया है. बट जस्ट टू put my concept across, what we see is that as we grow, our needs also evolve. चाहे वो खाने पीने से रिलेटेड हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो क्लोथिंग से रिलेटेड हो. ऑल राइट? एम आई ऑडिबल? Yes, तो sir. नहीं रहे आप लोग? नहीं, sir. ठीक है. So need is common. I'm sure. Now let's move on to a little higher concept, that is want. Need common है, hunger. You wake up with this need for food early in the morning. Some people want parathas. लोग कहते हैं भाई जब पराठे के बगैर हमारा नाश्ता नहीं होता है ना? पराठा है, कुछ लोग पूरी सब्जी खाते हैं, जलेबी भी लेते हैं. थोड़ा साउथ में चले जाइए तो वहां लोग जो नाश्ते में डोसा, सांबर, वड़ा, उत्पम. कुछ और जगह देख लिए तो वहां पता चला कि वो ब्रेड ऑमलेट, ठीक है, उनका मटरी ऑमलेट, अलीगढ़ में मटरी ऑमलेट चल रहा है, ब्रेड ऑमलेट है. ओखला चले जाइए, सुबह नाश्ते में लोग बिरयानी खा रहे हैं, निहारी खा रहे हैं. So what I'm trying to communicate is that the need is common, but wants are different, right? To fulfill or satisfy the same need, people want different types of products and services. Are you getting me? Yes, sir. So need is the बिल्कुल starting point है. Need is the basic thing, and as we try to look at the solutions as to how to satisfy those needs, then we come across the concept of wants. Now wants are specific satisfiers of the common need. A want क्या है? You want to cover your body. So some people will do it with a जीन्स एंड अ टी-शर्ट. उनको वो अच्छा लगता है. कोई लोग कुर्ता पजामा पहन सकते हैं, कोई लोग जो है तहमद और कुर्ता पहन लेंगे,
अरब में चले जाइए, अरब कंट्रीज में तो वो उनका जो है दिशदाशा या वो जुब्बा कहलाता है। बहुत सी जगह चले जाइए तो वो अपने शॉर्ट्स और टी शर्ट्स पहने हुए हैं, है ना। सो एंड अगेन कोई लेडीज हैं, शलवार कमीज है, साड़ी है, और तरह तरह के कपड़े हैं, कलर्स हैं। सो need remains the starting point. It remains common for all, but depending upon your choice, depending upon your cultural context, your preferences, depending upon fashion, you would want different items of clothing. ठीक है ना? Are you getting me? Yes, Yes, sir. sir. Now comes the third stage. That is the stage of demand. You are clear about need, which is the state of deprivation. You're clear about the want, which is specific satisfiers or specific solutions for that needs. Now the thing is the demand. Demand means that you want a specific thing, but you also have the ability and willingness to pay. Ability भी होनी चाहिए और willingness भी होनी चाहिए. Now suppose the need is for transportation. ठीक है? Need is for moving from one place to another. There can be n number of ways. आप पैदल चले जाइए, साइकिल से चले जाइए, बाइक से चले जाइए, कार से चले जाइए, and so on. But depending upon your preference, suppose you decide कि I want to buy a car for my transportation, and say for example you want a Jeep Compass, right? This is the brand you want. अभी तक ये want में है. You getting me? Yes, sir. ठीक है, you want a car and you specify that I want to buy a Jeep Compass. So you go to the showroom and inquire about that. या आपने मोबाइल पे देख लिया and you come to know कि जो उसकी ऑन रोड कॉस्ट है वो 37 से 38 लाख रुपए पड़ रही है. So one thing would be कि if you have the money and you are comfortable about disposing of that money in favor of buying that car, तो आप कहेंगे ठीक है भाई, let me place an order और गाड़ी खरीद लेता हूं. So it becomes an effective demand. Another situation can be कि आपके पास इतने पैसे ही नहीं है, तो जीप कंपास से हटके आप थोड़ा नीचे आ जाएंगे. हो सकता है आप कोई मारुति की गाड़ी ले लें 5-10 लाख रुपए में जो आती हो, तो जीप से हट गए, बट यू हैव सेटल्ड फॉर अनदर कार. There would be some people who would go for some kind of a, taking some loans, vehicle loans. They might get into some arrangement with the banks and they may end up buying a car. And some people would be of the category who will say, no, I don't have the amount of money with me, so I'll not buy a car. और इन सब के अलावा एक कैटेगरी और होती है. वो कौन सी कैटेगरी होती है? यस, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. एक कैटेगरी वो होती है आदित्य कि लोगों के पास पैसा होता है लेकिन वो खर्च नहीं करना चाहते. दे हैव द परचेसिंग पावर बट दे डोंट हैव द विलिंगनेस टू डिस्पोज ऑफ विद द मनी. उनके पास हो सकता है कि 1 करोड़ रुपए रखे हो अपने पास, लेकिन वो कहेंगे 38 लाख की गाड़ी लेके मैं क्या करूंगा, मैं तो अलीगढ़ में रहता हूं.
यहाँ तो सड़कें भी ऐसी हैं, मुझे जब जाना होता है कहीं पे, उसके लिए मेरे पास गाड़ी ऑलरेडी है, या मैं टैक्सी मंगा लेता हूँ, ज्यादा दूर जाना होता है फ्लाइट ले लेता हूँ। तो मैं 38 लाख रुपए गाड़ी में क्यों अपने जो है ब्लॉक कर दूं? यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर इतने में तो मैं जो है प्लॉट ले लूंगा, उसकी वैल्यू अप्रिशिएट करती रहेगी, isn't it? So this is also a category. So when a want has to be, when it has to graduate into a demand, it has to fulfill two conditions. Number one, the purchasing ability, and the other is willingness to purchase. ये दोनों चीजें होनी चाहिए, एबिलिटी भी और विलिंगनेस भी। आर यू विद मी? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So what we have seen, that the starting point of any marketing planning or any marketing strategy is to identify the need, right? अगर आपने नीड को आइडेंटिफाई कर लिया, सो हाफ द बैटल इज वन। आपने बात समझ ली, कस्टमर आखिर चाहता क्या। कितनी बार होता है आप शोरूम्स पे जाइए, स्पेशली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द लेडीज, जैसे अलीगढ़ में कॉमन ये साड़ी सुहाग है, ये सब है, तो वहां शुरू में वो आप थोड़ा सा फीडबैक दें, बताएं भाई हमें ऐसा चाहिए, पार्टी वियर चाहिए। थोड़ी देर तक वो आपको सूट्स दिखाते रहेंगे, एंड दे विल ऑब्जर्व यू, जो उनके सेल्स पर्सन हैं वहां पे, और थोड़ी देर में समझ जाते हैं। वो क्या कहते हैं, बाजी मैं बात समझ गया, आपको क्या चाहिए। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। फिर वो किसी लड़के कहेंगे भाई ये हटा लो सर, ये सब हटा लो। एक बार उसने ये समझ लिया कि आपको क्या चीज चाहिए, आपका क्या टेस्ट है, क्या रिफाइनमेंट है, उसके बाद फिर वो आपको वही चीज दिखाएगा जो आपको चाहिए, एंड देन यू विल से कि हाँ भाई अब आप समझ गए, अब मुझे ये चीज चाहिए। अब आप चीजें सही दिखा रहे हैं। पहले तो आपने मुझे जो है इतनी देर से, आधा पौन घंटे से ऐसी बेकार चीजें दिखा रहे थे, अब आपने जो है मेरे मतलब की चीजें दिखानी शुरू करी है। समझ रहे हैं बात को? Yes, sir. सही कह रहा हूं मैं, गलत कह रहा हूं? सही कह रहे हैं। चलिए, तो स्टार्टिंग पॉइंट यही है, यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट द कस्टमर वांट, उनकी नीड क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट अ बॉय वांट्स टू बाय अ मोटरसाइकिल, ठीक है, फॉर ट्रेवलिंग, मे बी वो अपने घर से यूनिवर्सिटी आना चाहता है, अपने गोइंग टू द वर्क, जो भी हो सकता है। तो नीड क्या है इसमें, व्हाट इज द नीड? Travel. ओके, और कोई बात? वो किस पर्पस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं वो नीड है। ओके, नहीं आई टोल्ड यू ना कि वो अपने घर से ऑफिस जा रहा है या यूनिवर्सिटी जा रहा है, अगर स्टूडेंट है तो यूनिवर्सिटी आ रहा है या कॉलेज जा रहा है ना। या ऐसे भी लोग हैं कि वो मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रेवल, आजकल तो रोडीज टाइप के लोग भी बहुत होते हैं ना, कि अपना बस वो चल रहे हैं, घूम रहे हैं, दे वांट टू एक्सप्लोर, ये भी चीजें हैं। सो यू हैव अ वेरी वैलिड पॉइंट व्हेन यू, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, कि किस पर्पस के लिए वो ट्रेवल कर रहा है। सो ट्रेवलिंग इज नॉट द ओनली थिंग, या ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट द ओनली थिंग। अंडरलाइंग मोटिव क्या है? somebody very rightly said the psychological needs. Are you getting me? Yes. Yes, sir. साइकोलॉजिकल नीड्स में हो सकता है कि वो अपने आप को ज्यादा यूथफुल, ज्यादा स्मार्ट पोर्ट्रे करना चाहता हो, बीइंग ऑन द बाइक,
trendy, casual, right? So it is more than the transportation purpose. It is, it is often about your image. How do you want to portray? How do you want other people to look at you? How do you want other people to, kind of perceive you? और इमेज खाली दूसरों की नहीं कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या समझते हैं. एक सेल्फ इमेज भी होती है कि आप खुद अपने बारे में क्या समझते हैं. अब आप अपने आप को कूल समझते हैं तो कूल लगने के लिए आप क्या क्या करेंगे? यू गेटिंग मी? क्या करेंगे कूल लगने के लिए? माई क्वेश्चन इज ओपन बिफोर यू. Yes? Am I तो audible? जो भी ट्रेंड चल रहा होता है उसको फॉलो करते हैं लोग. Very good. जो भी ट्रेंड चल रहा होता है, जो भी कैची थिंग्स होती हैं, चाहे वो एक्सेसरीज हैं, चाहे वो खाने पीने से रिलेटेड है, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, चाहे वो बुक्स हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स सीरीज हैं, जो चल रहा है, व्हाट इज द इन थिंग, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं. कितने लोग हैं इंस्टाग्राम का उनको यूज नहीं पता लेकिन वो इंस्टाग्राम पर हैं जस्ट टू बी ऑन द कूलर साइड, and there's no harm with that. It is it's a part of the today's society. So I'm not trying to be judgmental. It because everybody has a right to judge oneself and nobody else. आपको खुद डिसाइड करना है आप क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं. So when we talk about the needs, a very important thing is the psychological needs or the motives. Motives क्या है ना. अब आप देखिए कितने लोग हैं, अब वो say for example they try to save, help the needy. कितने लोग हैं गरीबों की मदद कर रहे हैं, उनको कपड़े पहुंचा रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, मेडिसिन पहुंचा रहे हैं. There are so many people who keep it as a secret, चुपचाप करके बात खत्म कर देते हैं. और कितने लोग हैं उसी के साथ सेल्फी, 10 रुपए का नोट देना, एक सेल्फी खींच के डाल दी, साहब मैं हेल्पिंग द नीडी. एक पुराना स्वेटर डाला, हेल्पिंग द नीडी. बोथ ऑफ देम आर डूइंग द सेम थिंग, लेकिन मोटिव बदला हुआ है. एक जगह खामोशी के साथ ये काम हो रहा है, एक जगह दिखावे के साथ ये काम हो रहा है. राइट? Both of them are doing good thing, but it is the motive, it is the psychological, reason which makes all the difference. Are you getting me? Do you agree with me or not? Yes, sir. अगर आपका कोई अपना ओपिनियन हो या कोई और चीज एग्जाम्पल या कोई चीज आप देना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज प्लीज, दैट विल बी द बेस्ट थिंग टू हैपन टू द क्लास. आई वुड वेलकम दैट. So as marketers, we must always understand that what the consumers want. Now let us try to move further. Have you heard about the concept of what is called as green marketing or societal marketing, social marketing? These are some of the contemporary or current concepts of in marketing management.
यस, Yes, sir. I have heard about green marketing. बताइए थोड़ा सा। सर उसमें हम उन प्रोडक्ट्स को मार्केट करते हैं जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। वेरी गुड। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, वेरी ट्रू। They are produced in an eco-friendly way using the environmental friendly ingredients. It is good for the consumers because they do not use any harmful chemicals or artificial ingredients. And once the utility is over, it is easier to dispose of. उसकी चाहे पैकेजिंग हो या कोई चीज हो। कितनी बार होता है कि वो बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, यू आर गेटिंग इन द अर्दनवेयर, मिट्टी की हंडिया में वो आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, काम खत्म हो गया, मिट्टी की हंडी आपने डाली फेंक दी। या आप कुल्हड़ में चाय पीते हैं, कुल्हड़ में लस्सी पीते हैं, आसान है बहुत, बिकॉज अल्टीमेटली द यूज्ड कप विल अल्टीमेटली इफ यू डंप इट, तो वो मिट्टी जो है वो मिट्टी में मिल जाएगी। इट इज इको फ्रेंडली, बजाय इसके कि आप प्लास्टिक कप यूज कर रहे हैं या थर्माकोल के कप यूज कर रहे हैं या पेपर कप्स यूज कर रहे हैं, अल्टीमेटली दे आर इफेक्टिंग द एनवायरमेंट, इजंट इट? Yes, sir. अलीगढ़ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ना सिर्फ अलीगढ़ की, शायद पूरी दुनिया की हो, दैट इज द पॉलिथीन पैकेजेस क्लॉगिंग द सीवेजेस। जगह जगह आप देखें, कहीं भी चले जाएं, अच्छे अच्छे मकान हैं, हम सब उसके हिस्सेदार हैं, वी आर अ पार्टी टू इट, कि मकान हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन सारी जो उसका जो पानी है और जो भी डंपिंग है बाहर के किसी एक प्लॉट में पड़ा होगा। अभी जिसमें मकान नहीं बना वहां डाल दिया कि जब तक बनेगा तब तक यहाँ कूड़ा डलता रहे, है ना। हमारा घर साफ रहे, लेकिन अड़ोस पड़ोस में कोई भी कुछ होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पॉलीथीन में जरा सी चीजें आ रही हैं, वो पॉलीथीन वहां फिक रहा है, नालियों में चला गया, नालियों में जाम हो गए, एंड सो मेनी इश्यूज which require our dire attention. And it is just a matter of being conscious. It is a matter of feeling responsible towards the environment. And it is a conscious effort to preserve this planet and hand it over to the next generation in a better shape. Excuse me. And that is why the concept of green marketing. जो ग्रीन प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या कॉस्मेटिक्स हैं, ऑर्गेनिक फाइबर्स हैं, नेचुरली डिपेंडिंग अपॉन their level of adaptation, depending upon the scale at which they are being produced, we must understand that if we are supporting a cause, then we also should be ready to pay a price for it. अब जो green products हैं, as compared to the commonly available products, or if I am to use the word cosmetics or artificial products, तो green products हमेशा महंगे होंगे। You getting my point? Yes, sir. Yes, sir. Isn't it? So if you are supporting this cause, then you should be able to pay a somewhat higher price. If you are supporting the cause of health, अब आप देखिए कोई भी खाना जो है, जो जरा भी हेल्दी होगा, चाहे वो रेस्टोरेंट में मिल रहा हो या अदरवाइज जहां से भी आप उसको अवेलेबल वो कर रहे हैं, या इवन घर में भी आप इफ यू ट्राई आउट द हेल्दी वे ऑफ कुकिंग, तो वो थोड़ा सा
एक्सपेंसिव होगा. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप होल व्हीट ब्रेड लें और जो ये कॉमन वाइट ब्रेड होती है, तो द होल व्हीट ब्रेड इज एक्सपेंसिव. 5 रुपए 10 रुपए महंगी होगी. मल्टीग्रेन ब्रेड लें, वो और थोड़ी महंगी होगी, बिकॉज इट इज हेल्दियर. जो खालिस मैदे की जो होती है रोटी या ब्रेड होती है, वो बहुत आसान है, आप जगह जगह मिलती है, सस्ती मिलती है, बट इट डज नॉट हैव क्या कि उसका जो सेहत पे जो असर है वो अच्छा नहीं है. सो when we are buying organic products, naturally we need to pay a slightly higher price. Something which is good for the society, something which is good for the environment, it will come with a price, it will come with an effort. Are you getting me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I will leave this session with a question that what are the underlying motivations? I've already given you a lot of food for thought. What are the underlying motivations for products and services which will fall under the gambit of Islamic marketing or ethical marketing? What are those motives? Why would anybody, irrespective of the faith, irrespective of their religion, would want to avail products and services which are related to, or which are being marketed under the, say, the halal label, halal cosmetics, halal medicines, halal food, halal travel, halal healthcare. There are so many things to look into, right? What are those values? What are those underlying motivations, right? So this is where I leave you today, and when we meet next time, inshallah. So we have a class tomorrow, but I think there's a conference in the department. If we get a message for the suspension of classes for tomorrow, then I'll communicate to you. Otherwise, we'll have a class. Okay. So thank you very much for joining, and whatever we have discussed and the questions that I have raised, try to look into those things so that we have a fruitful discussion in the next class. Thank you for joining. Thank you, everybody. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.